आर्मी बेस्ड फिल्म हो या सीरीज हो, होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस. तभी तो द एक्शन पेस्ड, फास्ट पेस्ड, थ्रिलिंग एडवेंचर राइड विद कोड एम सीजन 1 and 2 हैज बीन सच अ सक्सेस. नहीं अभी तक सीजन 2 देखा है यारो, देख डालो, बिकॉज जिस क्लिफ हैंगर पे वो खत्म होता है ना, वी आर बाउंड टू आस्क दिस क्वेश्चन, सीजन 3 आ रहा है या नहीं? वेल, टू आंसर दिस एंड आई ट्राई टू गेट द आंसर फ्रॉम द मैन जिनकी वजह से ट्विस्ट आया है, तनुज इस वक्त हमारे साथ है, तो उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तनुज, अ वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म. थैंक यू निधि. एंड मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, थैंक यू इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए. इट इज सच ए रिलीफ फॉर मी कि मैं फाइनली कोड एम सीजन 2 के ट्विस्ट के बारे में बात कर सकता हूँ. इतने टाइम से जब हम प्रेस कर रहे थे शो के लिए, तो काफी जर्नलिस्ट और मीडिया वाले और मेरे दोस्त भी पूछ रहे थे कि अच्छा सीजन 2 में नया क्या है, इस बार क्या कर दिखाओगे. हमने है नहीं, थ्रिलर है, इसमें ट्विस्ट और टर्न्स रहेंगे. ट्राइंग टू गिव अ वेरी एसोटेरिक, वेरी वनीला आंसर, बट अब ऑफ कोर्स सारे पोल खोल चुके हैं. So it's really exciting यार. And I'm just so happy क्योंकि ऑडियंस का रिस्पांस भी इस बार बहुत ही सही गया है. बिकॉज इमेजिन आप 2 सीजन से इसी सिचुएशन की तरफ बढ़ते जा रहे हो, बट किसी को खबर नहीं है. So it was very nice. और आजकल सोशल मीडिया की वजह से you get such instant feedback. अगर पब्लिक को आपका काम पसंद आए तो वो सराहेंगे, अगर ना पसंद आए उसके बारे में 2-3 चीजें सुननी पड़ती है. सो इट्स बीन रियली इंटरेस्टिंग. करेक्ट. तो देखो, ऑब्वियस क्वेश्चन सबके दिमाग में यार यही है, क्योंकि जिस क्लिफ हैंगर पे सीजन खत्म हुआ है, सीजन 2, सो इज देयर अ सीजन 3 कमिंग? There should. See, honestly, it has to. See, of course. I see. Along with being part of the Codem, मैं इस शो का बहुत बड़ा फैन भी हूँ. तो मैं भी देखना चाहूंगा कि इसके बाद what happens next. Between Major Monica and Angad and इतने सारे कहानियां बचे हैं कहने के लिए. Because it really ends on a cliffhanger. Correct. But for better or worse, it's not my place to say कि season 3 आने वाला है, नहीं आने वाला है. होपफुली जो हमारे प्रोड्यूसर है समर खान और जो हमारा प्लेटफॉर्म है वूट और जियो स्टूडियोज, वो अनाउंस करेंगे कुछ ना कुछ. बट चांसेस आर लुकिंग गुड. सो लेट्स सी. आप जैसे हमारे शोज देखते रहोगे और नंबर्स आते रहेंगे और अच्छे रिव्यूज और अच्छा फीडबैक आता रहेगा. सो इट एट द एंड ऑफ द डे इट इज नोन एज द फिल्म बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री. तो इट इज अ बिजनेस. तो यस, इट्स अप टू द ऑडियंस. नहीं, कोई पेटिशन साइन करानी में बता दो आप, मैं करवा लेती हूँ. होपफुली उसकी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले वो ग्रीन लाइट कर देंगे. बट लेट्स सी. नहीं तो मैं आपके पास आ जाऊंगा. नो, बट ऑनेस्टली हाउ डज इट फील तनुज, कि मतलब ऑब्वियसली जब आप एक सीरीज का हिस्सा बनते हो उस वक्त नहीं पता होता, वेरी रेयरली डू यू नो कि इसके कितने सीजन्स आएंगे, फॉलो अप होगा या नहीं होगा, बिकॉज इट्स टेस्टिंग वाटर्स विद द फर्स्ट सीजन. ऑडियंस कैसे परसीव करेगी. You've been fortunate to be part of such series जहां जिनके सीजन्स आए हैं, जिनको बिल्कुल हाथों हाथ ऑडियंस ने लिया है. तो कैसा लगता है यार इस सक्सेस वैगन में बैठना? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. एक जॉब सिक्योरिटी भी होती है और एक कंटिन्यूटी भी आती है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आप क्रिएटिवली एंड फाइनेंशियली स्पीकिंग ऑन बोथ वेज. बिकॉज मैं लॉन्ग फॉर्मेट का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, इसलिए बिकॉज इट रियली अलाउज मी एज एन एक्टर टू ओके. सो आई विल गिव एन एग्जांपल. नाउ आई थिंक अब तक जो मेरा लॉन्गेस्ट रनिंग कैरेक्टर रहा है वो है वायु राघवन इनसाइड एज का. करेक्ट. So when I started playing that character, I was around maybe 29 years old, और अब मैं almost 36 का हो गया. So almost 6.5-7 years of my life I have played one character. और मैंने observe किया कि जैसे मैं evolve हो रहा हूँ as a human being या as an actor, वो character भी evolve होते जा रहे हैं. So same goes with Angad, because पिछली बार जब मैंने कोडेम सीजन 1 के लिए शूट किया था, वो I think 2019 में किया था. उसके बाद पैंडेमिक आई, हम सबकी जिंदगी में इतने सारे चेंजेस, इतने सारे बदलाव आए. एंड टू गेट द चांस टू गो बैक टू प्ले अंगद संधू अगेन वाज रियली अमेजिंग. तो बहुत अच्छी फीलिंग है. और वो मैं कभी ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि अच्छा मैं ये प्रोजेक्ट साइन करूंगा, बिकॉज मुझे पक्का पता है कि इसका सीजन 2 बनेगा. यू कैन नेवर बी कंप्लीसेंट, यू कैन नेवर बी टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स. ऑनेस्टली जब मैंने कोडेम साइन किया था तो मुझे लगा एक वन एंड डन शो है. जिस तरह से सीजन 1 खत्म भी होता है, even it was just a one single season thing, वो चल जाता. It was based on the army, conspiracy theory, thriller, drama, emotion, वो सब था उसमें. But अब expectations काफी है, because
ऑलमोस्ट आई थिंक 2-2.5 साल से ऑडियंस स्पेशली सोशल मीडिया पे मैं जहां भी जाता हूँ सब पूछते कि 3 शोज के बारे में पूछते। एक तो है इनसाइड एज ऑब्वियसली, एक है कोडेम और एक है कार्टेल। ये 3 शोज के बारे में लोग अक्सर मुझसे पूछते कि भाई अगला सीजन कब आएगा। और कभी कभी मुझे उसका जवाब पता भी होता है बट आई कांट गिव एनी आंसर, और कभी कभी मुझे खुद पता नहीं होता है। लाइक दिस, ये जो अंगद वाला ट्विस्ट है, इसके बारे में मैं 2020 मार्च से मुझे खबर है। Okay. क्योंकि जब हमारा सीजन 1 का सक्सेस पार्टी हुआ था तो हमारे प्रोड्यूसर हमारे साथ बात कर रहे थे, जेनिफर मेरे साथ, तो ही टोल्ड मी दिस टाइम यू आर गोइंग टू बी द बैड गाय, बट हम इसे बिल्कुल एंड में रिवील करेंगे। सो या बट देन यू हैव टू लिव विद दैट सीक्रेट, नहीं नहीं आई डोंट। घर पे मैं तो घर पर भी झूठ बोलता हूँ। मेरे 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 मम्मी पापा भी पूछते कि अच्छा दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग, वाई राघवन गोस टू जेल, मेजर भाव बच जाते हैं कार्टेल में, अंगद और मोनिका की शादी हो जाती है, क्या क्या सवाल पूछते घर पे। मेरी ग्रिलिंग तो सबसे ज्यादा घर पे होती है। और मैं बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो हाँ वो खुश है मैं खुश हूँ, मैं कुछ गंदा बोरिंग जवाब देता हूँ। And then I see the look on my parents' face. They're like, "Yeah, it sounds like a very boring season, yaar." I'm like, "हाँ, boring." देखना तब पता चलेगा। हाँ, because for me, my family is also audience. I want them to enjoy. I want that shock value कि जब देखेंगे तो बोले यार क्या? हाँ, Whoa, so yeah. आई वो मजा खराब नहीं करना ना कि पहले ही बता दो कि अच्छा इसमें मैं ना आई एम द बैड गाय हियर। हाँ, you don't want to spoil that surprise, for your family, for your friends. क्यों यार? करेक्ट हाँ, करेक्ट। बट yeah. यार एक वो बताओ आप तनुज, जिस तरह से कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आपके हर सीजन में या हर सीरीज में हुए हैं। वायु आपने प्ले किया तो डिफरेंट शेड था, फिर काटिल में आपका डिफरेंट कैरेक्टर शेड, यहाँ अंगद बिल्कुल डिफरेंट है। व्हेन यू लुक फ्रॉम वन कैरेक्टर यू प्ले टू द अदर, ह्यूज डिफरेंस। तो एज एन एक्टर जो इतना इन्वेस्टेड रहते हैं इन द लॉन्ग फॉर्मेट, जहां पर आप यू प्लेइंग द कैरेक्टर, यूर इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, तो फिर नेक्स्ट में स्विच, व्हाट, हाउ डू यू डू दैट, व्हाट्स योर सीक्रेट? See, I think it boils down to a number of factors. A तो the writing, because मैं तो writing को follow करता हूँ, चाहे कार्टेल की स्क्रिप्ट हो, इनसाइड एज, कोडेम, दे वेरी वेल रिसर्च स्क्रिप्ट्स और वेरी डिटेल्ड स्क्रिप्ट्स। तो मुझे जितने भी सवाल है, I can find all the answers there. Secondly, your director, because मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो कभी जाकर शॉट देकर प्लेबैक चेक नहीं करता। I feel conscious. I feel कि like we are in a little bubble which we have created, which is like ये जो कोडेम की दुनिया है या इनसाइड एज की दुनिया है या कार्टेल की दुनिया है, whatever. So I don't like to break that illusion. तो unless and until कुछ गड़बड़ हो रहा है and the director's like please come and see this, I need you to do this or I need you not to do this, मैं ज्यादा चेक नहीं करता हूँ. So I have a lot of faith in all the directors जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करता हूँ. And कोडेम में तो it was great because जो हमारे पहले सीजन के डायरेक्टर थे अक्षय, he is also the director for season 2. So we have a very good working equation like that, Thirdly, what I do is अलग-अलग किरदार, अलग-अलग कैरेक्टर्स के लिए I have different music playlists. Because मैं म्यूजिक से बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, and normally it is more like instrumental music. उसमें कोई लिरिक्स नहीं होंगे, and it could be classical, it could be a movie soundtrack. So like for Angad, I'll have 2-3 songs which are his happy songs. So I'll have 2-3 songs which are his sad songs, emotional songs that take him to his past, songs that make him feel lovey-dovey, songs that make him show the duality of his character. So I have like about maybe 20 to 25 songs per character. तो मुझे पता नहीं कि कब मुझे इस कैरेक्टर को revisit करना होता है, So whenever I have to, I just go and I start listening to that music again, and somehow music helps me go back to where I want to. And the last thing, which I don't know, a lot of people find a little strange, is I use perfume for different characters. So हर character के लिए I use a different perfume, and I don't know why it makes me feel a bit different. So अगर real life में मैं perfume A वापर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी specific project पर काम कर रहा हूँ, I will use a separate perfume, but I will use that same perfume for the entire shoot. For example, Cartel के लिए तो problem हो गया था because we shot Cartel for almost 2 years because COVID-19 happened in the middle, right? So we could not shoot and all. And then my perfume bottle got over, and because the borders were closed and all, it was very difficult to get that same perfume over here. I should have just chosen some simple perfume, or maybe stupid हो. And somehow मेरा एक जो दोस्त है वो दुबई से आ रहा था because दुबई हम जा सकते थे, and he managed to get me that. So otherwise I was panicking. I'm like नहीं यार, मैं कैरेक्टर खो जाएगा, मैं कैसे करूँगा काम, So it was like that.
So I use these four things. You know, it's my own अलग सा technique. I'm not a trained actor, तो you know मैंने काफी सारे अलग अलग दिग्गज एक्टरों के साथ काम किया है जो थिएटर से, NSD से, यहाँ से वहां से, and like kudos to them, lot of respect. But जो मेरे लिए काम करता है, I try and follow that routine. Wow, I think and हर एक्टर की अपनी डिफरेंट अप्रोच होती है, अलग अलग हाँ, किस तरह से अपने चैलेंजेस को वो फेस करते हैं. But talking and also because normally होता क्या है कि it's not just me returning to that character, it's my other co-stars also returning to their character. So if they are behaving and acting the same way they did in the previous season, it makes it easier because acting is also about reacting, ना. तो जैसे अगर मैं जेनिफर के साथ काम कर रहा हूँ and because she's so always on point, you will not think that she was not Major Monica Mehra for even like 2 seconds. Like she came back and she was back in the groove, you know. So it made it easier because we're bouncing off each other's energy. You know, it's a easy dynamic. It's also a bit of a chalk and cheese dynamic between Major and Angad. So yeah. Correct. So then what is your criteria? जब आप कोई स्क्रिप्ट को हाँ कहते हो, किसी शो का पार्ट बनने के लिए हाँ कहते हो, what is your top criteria? Do you look at how meaty your role is, or do you look at how effective your role is? I never look at how meaty my role is. I know it might sound like, oh, yeah, tu jhoot bol raha hai, sab actors ko zyada screen time chahiye, they're narcissists and all that. But yes, I do look at how my characters' motivations or words or actions impacts the larger or the bigger picture. You know, let's talk about Codem season 2 only. This is Jen's show. This is her show all the way. She is front and center. She's Major Monica Mehra. She's on this quest to, unravel the truth. But whenever I show up on screen, and especially towards the second half, I'm contributing towards shifting the dynamic of the show. Mm-hmm. So for me, that is more important. Of course, there are certain shows like a Cartel or an Inside Edge or a Tandoor, shows like that where I might be more front and center. But for me, I need to resonate with the material that is offered to me. Like, okay, this is my star cast. I want to work with these people. There are a lot of actors that I want to work with. Which धीरे धीरे करके I'm trying to get there. I recently worked with Gajraj Rao. I recently worked with KK Menon. I recently worked with Vijay Raj. So I'm not talking typically just A-listers. I'm talking about like actors, solid actors, people we've grown up seeing, you know. Secondly, of course, if you are giving me a narration as a producer or a director or a writer, and I start getting shifty and shuffly and impatient within the first 10 minutes, that means it's not working for me because I am hearing your script from audience point of view. ऐसा नहीं कि अच्छा मेरा रोमांटिक सीन है, अच्छा मेरा एक्शन सीन भी है, ओ मेरे इतने सीन है इस एपिसोड में, सिर्फ 3 सीन, नहीं ये तो बहुत कम है, बात करनी होगी. So I can't do that. And thirdly, of course, platform is important, because nobody sets out to make a bad film or a bad show. सब चाहते हैं कि that they make the best show possible, but you also need to make sure that you give your show the best chance to succeed. और वो तब हो सकता है जब आपके पास या तो अच्छी बैकिंग हो, अच्छा प्रोडक्शन हाउस हो, या in this case for OTT platform अच्छा प्लेटफॉर्म हो. It's very important because marketing is key. इतने सारे shows, audience is spoiled for choice. Not just Hindi films and shows, but regional shows, international shows. The world has become very global. It's no longer global; it's become global. So I feel it's important to look at all these things. Because हम home video थोड़ी ना बना रहे. We're not making it just for ourselves. We are making it for the world to see. Of course, कोई ऐसे भी shows होते हैं, ऐसे भी फिल्में होते हैं जिनका बड़ा niche audience होता है, और कभी-कभी हर artist में वो कीड़ा होता है कि I want to revisit the actor in me and all that. मेरे साथ भी हुआ है. Passion project जिसे कहते हैं. But by and large, I think you have to look at these factors. At least this is what I try and do. Yeah. Okay. So अभी आपने mention किया. And if the money is good, then no harm. No complaining. Because I'm busy. So Tanuj, आपने mention किया कि there's this list of actors you want to work with, and I truly agree. हर एक्टर की, हर आर्टिस्ट की रादर अपनी एक बकेट लिस्ट होती है ऑफ द काइंड ऑफ पीपल जिनके साथ उन्हें काम करना है, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करने हैं. तो आपकी टॉप 5 अगर मैं पूछूं बकेट लिस्ट में क्या चीजें हैं? So top 5 in no particular order. I would definitely say Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Nawazuddin, Pankaj Tripathi, and Manoj Bajpayee. Okay, so these are the actors that you wish to work with. Yeah. किस तरह के roles, projects? No, but because I only said like male, now for female, if you're asking me, can I say female also? Yes, please. Okay, Vidya Balan, Tabu. I love her. I love her. Of course. Like, I think phenomenal. Like, she just gets better with age.
करेक्ट एंड किस तरह के प्रोजेक्ट्स में डू यू सी दिस होल यूनिजन हैपनिंग कि जहां पर इन सब लोगों के साथ आप काम कर सके? I have no idea. I mean, I'm very open as an actor. मैं चाहता हूँ कि मैं हर किस्म का रोल करूँ और या हर जॉनर का फिल्म या शो करूँ. So I'm very open like that. I don't have any rules कि नहीं ये मत कर या सिर्फ वो कर. I'm not trying to position myself in any way. If you observe okay, so basically I look at my career in two halves. Everything till Inside Edge, यानी कि the first three films where I was trying very hard कि मुझे हीरो बनना है. I was not thinking कि मुझे एक्टर बनना है. And then One Night Stand के बाद जो 2016 में आई, उसके बाद मैंने Inside Edge came. There was nothing hero about Vayu Raghavan. He was a womanizer. He was into drugs. He was a bad boy. There was nothing, but something about him. It's not about being hero. It's about doing a heroic deed, and that makes a difference in the audience's eyes. Even an ordinary man can do something extraordinary. So I started focusing a lot more on that. Okay, a lot of characters are great. In real life, most of us are great. Why should I shy away from playing such characters? Maybe the audience would be able to relate to it more. It was a calculated risk and all. So I don't really think or put myself in a box and stuff and all. Like I have played an out and outright negative character on a show like Kamatipura, or a really negative character on Tandoor, which was ironically based on a real life person. And a lot of people लोग मुझसे कहते रहे कि यार ये मत कर, this you're committing career suicide, ये हाराकिरी है, आपका perception बदल जाएगा, you are known as a chocolate boy next door, bad boy, this that, flirty, ये क्या है, आप इसमें आप एक शराबी हो, wife beater हो, murderer हो. I'm like, but I want to see कि मुझसे होगा कि नहीं. Sometimes you learn a lot more by falling from failure than you do with success. जब आपके शोज काम करते हैं, आपको अच्छे रिव्यूज, अच्छा फीडबैक मिलता है, सब आपको कॉल करते हैं, तो यू फील इट्स ह्यूमन यार, यू फील लाइक द कैट्स व्हिस्कर्स. बट जब आपकी फिल्म्स और आपकी शोज काम नहीं करते हैं, दैट्स हैपेंड विद मी. आई हैड अ वेरी ordinary and poor start to my career. First 4 years were horrible. Everything I touched, anything I wanted to do, flop. It didn't work beyond 2 days at the box office. So I'm like, that didn't work for me. Let's see, maybe life has given me a second chance. Let me grab it with both hands. What do I have to lose? So that was the entire mindset. Correct. So figuratively, literally, everything changed after Inside Edge. Absolutely. And may it keep changing Nidhi, and moving to the better. I have to tell you one thing. The irony that life is so strange. One Night Stand released on 5th of May 2016. That is the same day I had gone for the film with my mom and dad. During the interval, I get a call from someone at Excel. They're like, hey, you're tested for the show. That time it was not called Inside Edge, it was called Power Play. We've tested for the show Power Play. We have taken over the project. Are you still interested? If you are, please come into the office. I got offered Inside Edge the day One Night Stand came. And for me, that's crazy. And after that, your success is not a one night stand, and I hope it continues to remain like that. I hope so. Touch wood to that. I just enjoy acting. So I mean, I'm not very concerned ki yaar, I don't want to be some big superstar and all, but I want to do good work. And I want to do good, meaningful work. And your audience enjoys the entertainment you're putting across. So may God be always kind on you. आपको बहुत कमाल के projects मिले, और bucket list में ये जो तबू आपने कहा है, और बाकी भी जो नाम है, वो definitely आप उनके साथ काम करें, and maybe get to have more opportunities of interviews like this. And I really hope, Nidhi, next time, because God willing now COVID सब कह रहे कि it's becoming less and all that. I really hope अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी, हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ, it will be face to face in person, Yeah. Let's manifest that. We have to manifest that, yeah, because when you're aamne-saamne sitting and talking to someone, the conversation, just the sur is very different. Correct, and I really enjoy that. Correct. So maybe see that, hoping बहुत soon वो भी हो. Until then, wish next you release, all the luck. Thank you, Nidhi. Thank you so much. You. Really Bye-bye. Thanks. Bye.